नमस्ते। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पैटेंट्स फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। तो चलिए इस वीडियो के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। जो पॉलिसी मेकर्स है इंडिया में, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि वो स्टार्टअप्स और माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज को एम्पावर कर सके। इनका मेन एम स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को नर्चर, प्रोटेक्ट और एनकरेज करना है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंपोर्ट्स में बढ़ोतरी होगी और होलिस्टिकली देखा जाए तो कंट्री की इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी। In trudging the path of a growing knowledge-based economy, it is important for startups and MSMEs to embrace intellectual property protection. It is important for startups and MSMEs to embrace intellectual property protection, especially for their technologies, know-how, and brands. There is ample evidence, as witnessed in the past decade, that startups and MSMEs which apply for patents, trademarks, or designs are more likely to grow quickly and succeed than those that do not. The benefits reaped by startups and MSMEs in protecting their IP assets are manifold. Following are few examples through which startups and MSMEs build their businesses using IP protection as key element. सबसे पहले, growing license sales and royalty values. डॉक्टर मिलिंद रानी, जो एक फ्रीलांस कंसल्टेंट है, उन्होंने एक डिज़ाइन को कंसीव और डेवलप किया जिसे वो कहते हैं मैट्रिक्स हीट रिकवरी यूनिट यानी MHRUs. The invention relates to a heat exchanger, an innovative compact design to heat fluids using waste heat from exhaust and can be used to heat a variety of fluids. It can recover heat from hot gases and or vapors from engines, gensets, boilers or furnaces. जो हीट होती है वो स्टीम, गर्म पानी या गर्म थर्मिक फ्लूइड के रूप में रिकवर होती है। Dr. Rane signed a MOU with Unidyne, a small-scale company which grants a license to Unidyne to manufacture and sell the MHRUs as engine exhaust, fire system generators, and water and thermic heaters. The agreement stipulated a royalty of 4.5% of net sales for the inventor. जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था डाउन पेमेंट रॉयल्टीज के रूप में, उससे उन्हें दूसरे इन्वेंशंस को डेवलप करने में बहुत मदद हुई थी। The process leading to commercialization of the MHRU was an eye-opener for Dr. Rane on the potential benefits that can result from effective use of the patent system. Yulu Bikes Private Limited is a pioneer in the micro-mobility space in India that has made urban mobility seamless, affordable and sustainable. The electric bicycle and rental startup is targeting commuters' first and last mile connectivity requirements via dockless, battery-powered two-wheelers. IP protection of Yulu Bikes include patents, trademarks, domain name and design of Yulu Bikes. Such strong IP protection has led several investors including Uber, Bloom Ventures, 314 Capital, Wavemaker etc. to collaborate with Yulu to build a large-scale micro-mobility business in India. तीसरा, making startups or MSMEs more valuable for acquisition. MechMocha Game Studios, initially known as Hungry Games Private Limited, is a mobile game development company started in 2011. In 2020, Indian e-commerce major Flipkart announced its acquisition of the intellectual property of mobile gaming startup MechMocha, the company behind the live social gaming platform HelloPlay. Flipkart took over 10 odd games that MechMocha has developed over the past 5 years, including Ludo, Carom, Snakes and Ladders and Cricket. चौथा, University Research to University Spin-out. Manjeera Digital Systems Private Limited, started in 2014, incubated with University of Hyderabad and co-incubated with IIT Hyderabad, is involved in the development of state-of-the-art processor architecture. They have patent applications pending in the following technologies. First, middle stratum operation-based computing. Second, true data plane architecture which provides very high performance at lower power consumption, and third, low gate counts relative to existing technology. Their in-house technologies, applications in high performance computing, consumer electronic devices, high-end computer vision processing for auto infotainment, autonomous driving, remote sensing, surveillance and so on. पांचवा, using trade secrets to stay on the competitive radar. ज़्यादातर स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती दौर में टेंजिबल एसेट्स की कमी होती है। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, कार या लैंड। Therefore, it is important for them to safeguard the data which serves as the primary asset.
The said data may be collected over time, investing innovative and technical skills. ये डेटा भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए क्वालिफाई हो सकता है. Startups which rely on their data must ensure proper data protection is followed for privacy concerns. छठा, trademarks and commercial partnerships thereon. Swiggy trademark was registered early, when pre-filing searches indicated there were few third-party rights that might prevent its use. As the company grew and moved into the realm of collaborations and commercial partnerships, non-disclosure agreements यानी NDAs and trademark registrations were added to its IP estate. भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी 300 से ज़्यादा सिटीज़ में फूड डिलीवर कर रही है. स्विगी ने अब बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन तैयार कर दिया है और कंपनी के गुडविल को इसका बहुत फ़ायदा होता है. स्विगी ने आगे दिए गए कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है जिसके कारण उनका बिजनेस इम्प्लीमेंट आसानी से होता रहे. फर्स्ट, बर्गर किंग टू प्रोवाइड डिलीवरी सर्विसेज. सेकंड, गूगल लोकल गाइड टू फैसिलिटेट कस्टमर रिव्यूज. थर्ड, Sodexo to enable customers for paying through meal cards. Fourth, partnered with Indify Technologies to facilitate a financing program for partner restaurants. Fifth, launching a digital wallet, Swiggy Money in partnership with ICICI Bank. Sixth, Swiggy and drone company Andra Technologies have started with their trials for drone deliveries in India as per a recent announcement. Without trademark registration and RAM-proof licensing arrangements, allowing a third party to apply your trademark to their goods would put you at risk of losing it. Trademark registration typically किसी भी कंपनी के मार्क को 10 साल के लिए प्रोटेक्ट करता है, बट इसका एडवांटेज यह है कि वो टाइम टू टाइम उसे रिन्यू कर सकते हैं. चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं. IP protection helps in creating value and growth around the intangible assets through licensing, raising capital, pooling and paving way for acquisition. Without IP protection, rolling out new products or processes or even disseminating new product ideas by startups or MSMEs are at huge risks. Therefore, it is of prime importance for a startup or MSME to consult an IP attorney like Company 360 to identify novelty and industrial applicability of their technologies, which will definitely be a golden wand for a seamless IP strategy for successful revenue creation. तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है. अगर आपको इस विषय के बारे में या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में और जानकारी चाहिए तो कंपनी 360 की वेबसाइट को ज़रूर भेज दें या हमें यहाँ दिए गए ईमेल या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें. इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद.